देखो बहुत सारे परफेक्ट। लोग ना एज पे जाके गिव अप कर लेते हैं। हाँ, आपको गिव अप नहीं करना। रीजन बीइंग स्मॉल ऑडियंस के सामने मिस्टेक करना सही बात है रादर देन बड़े ऑडियंस के सामने। मैं जैसे जब स्टार्ट किया था 2020 में, जी। 2019 में मैंने वीडियो क्रिएशन स्टार्ट किया। हाँ, फर्स्ट 87 वीडियो मेरा Yeah. अभी भी अनलिस्टेड है रियली यूट्यूब में। रियली मैं कभी उसको पब्लिक नहीं करा, मेरे पास भी फियर था। जी। बट एक मोमेंट में मुझे कि क्या मैं किस लिए कर रहा हूँ, मैंने जब रियलाइज किया कि यार अगर एक इंसान भी हम्म बेनिफिट हो सकता है हम्म तो व्हाई नॉट फॉर देम। अगर आप ऑनलाइन स्टार्ट करना चाहते हो कुछ भी, जी। तो आप ऑथेंटिक रहो ओके, एंड धीरे धीरे हम्म। आप क्या पसंद करते हो उसके बारे में शेयर करते जाओ। ठीक है, जो आप हो वही दिखाओ। ठीक। डू नॉट ट्राई टू showcase something that you are not. Hello everyone. Are you a coach, consultant or content creator in the online space? क्या आप अभी शुरू कर रहे हैं या मिड करियर ब्लूज में फंसे हैं? डू यू ऑलवेज वंडर वेबिनार करूं तो कैसे? लीड्स नहीं आती, अगर आती हैं तो कन्वर्ट नहीं होती। हाउ टू क्रिएट ए हाई टिकट ऑफर? हाउ टू क्रिएट माई सेल्स पिच? फेसबुक करूं, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन? वेयर शुड आई फोकस? And how to focus? Who's my ideal client profile? If these are the questions that are bothering you, आपको हमेशा इनके जवाब नहीं मिल रहे हैं, then you are at the right place today, because we have with us none other than Sagar Sangam Sahu. Hello everyone. I'm really happy to be here with a special person in our podcast, and he's been amazing, and I've been looking forward to have him, and I'm really really fortunate today here to be with Sagar. Thank you, Sagar, for giving us your time. Thank you And so much. being a newbie coach in the online space, I've been looking forward to you, and I've been following you for such a long time, and I think I'm really really fortunate to be with him live here today. So let's see what he has for us. Yes, Sagar. So, because I have been a coach like offline, and I have never done anything online. So, what do you suggest for a person like me who's very much inspired by you, but I really don't know what to do? Where to start with? So you said you are already doing offline, right? Yeah. So first thing is जो ऑलरेडी आपके लिए काम कर रहा है उसको कभी भी आपको टच नहीं करना है, मतलब छोड़ना नहीं है। छोड़ना नहीं है, Okay. है ना? हाँ. बिकॉज वो बोलते हैं ना कि नेवर किल योर गोल्डन गूस। Yeah. वो You're right. आपका समथिंग जो कि आपका ऑलरेडी चल रहा है अच्छा, जी। उसको मत छोड़े, है ना? जी. आप एक्सप्लोर कर सकते हो ऑनलाइन जी। टू स्टार्ट लाइक स्मॉल स्टेप बाय स्टेप। How to explore? Because I हाँ। see you're so confident. I really get stuck. मैं क्या करूँ? When I start recording even. जी, बताइए। मैं जैसे जब स्टार्ट किया था 2020 में, जी। 2019 में मैंने वीडियो क्रिएशन स्टार्ट किया। हाँ, फर्स्ट 87 वीडियो मेरा Yeah. अभी भी अनलिस्टेड है really, यूट्यूब में। really. मैं कभी उसको पब्लिक नहीं करा, मेरे पास भी फियर था। जी, बट एक मोमेंट में मुझे कि क्या मैं किस लिए कर रहा हूँ। अगर जी, मैं डर रहा हूँ, जो लोग मे भी मेरे से, वो हम परफेक्शनिस्ट चक्कर में हमने नहीं डाला। हम्म, बट मैंने जब रियलाइज किया कि यार अगर एक इंसान भी हम्म, बेनिफिट हो सकता है हम्म, तो व्हाई नॉट फॉर देम, yes, है ना? देयर इज ऑलवेज लॉट ऑफ पीपल लुक अप टू अस, राइट? yeah, yes, you're right. सो उनके लिए बनाना है। वहां से मैंने स्टार्ट किया जर्नी, Okay. कंटेंट क्रिएशन करना, हम्म, पब्लिकली डालना। तो अगर आप ऑनलाइन स्टार्ट करना चाहते हो कुछ भी, जी, तो आप ऑथेंटिक रहो okay, एंड धीरे धीरे हम्म, आप क्या पसंद करते हो उसके बारे में शेयर करते जाओ। ठीक है, आपको नहीं बताना है, मतलब जरूरी नहीं कि आप नीश के ऊपर बात करो। perfect, यू कैन टॉक Perfect. अबाउट योर लाइक व्हाट यू लव डूइंग इट, व्हाट इज समथिंग दैट यू लव रीडिंग इट। Yeah. ये भी आप कर सकते हो। जी, धीरे धीरे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो, लोग धीरे धीरे जानेंगे हम्म, ऑनलाइन पे, जी, है ना? धीरे धीरे जैसे जानेंगे, धीरे धीरे लोग आपको अप्रोच करते जाएंगे, perfect, है ना? perfect, बट फर्स्ट थिंग इज हमको वो डर को साइड पर रख के डालना है धीरे धीरे। perfect. I'll follow that. Thank you so much for this advice, and I really feel inspired. Thank you so much. Right. So I want to know, what was the first few challenges? Like, आपने 2020 में start किया. So what were the first few challenges, so that if I hear from you today, I'll be prepared for that one thing, and maybe I can overcome in a better way.
बताइए क्या था शुरू में? आपको कोई लाइक मतलब कोई वीडियोस लाइक नहीं करेंगे, आपको जी। व्यूज नहीं आएंगे, जी है ना? जी ऐसी चीज होने वाली है जी डेफिनेटली फॉर श्योर, जी बट आपको गिव अप नहीं करना है। परफेक्ट रीजन बीइंग स्मॉल ऑडियंस के सामने मिस्टेक करना सही बात है रादर देन बड़े ऑडियंस के सामने। जब दिस बड़े ऑडियंस आपके पास आ जाएंगे तो वो छोटे जो लाइक मिस्टेक तब तक वो जो मिस्टेक्स आपके पास होंगे वो सब कम हो जाएंगे दिस आपके इज सो लिए। इंस्पायरिंग, यू नो। या आई वाज सो स्केयर्ड ऑफ नाउ मेकिंग जस्ट इमेजिन मिस्टेक्स। अगर आपके वो गलतियां आप 1000 लोगों के सामने करते तो वो ब्लंडर हो जाता, जी बट 2 लोग के सामने मिस्टेक क्या कोई दिख नहीं रहा है चलो, बट वो जो मिस्टेक करते 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 आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को ग्रो कर रहे हो। हाँ दैट इज द बेस्ट ऑफ ये हाँ फर्स्ट चैलेंज आपको होगा कि नो व्यूज, नो लाइक नो लाइक्स, बट आपको नोबडी इज मॉकिंग। या नोबडी एंड यू स्टार्ट ग्रोइंग। एंड सेकंड चैलेंजेस जो कि आपको सेल्फ डाउट बहुत आएगा, है ना? यू राइट। एक चीज आपको ये करना है, अगर किसी और के लिए काम कर चुका है तो जी आपके लिए भी काम करेगा। ये जी ट्रस्ट रख के आपको आगे जाना है। परफेक्ट। सो कंसिस्टेंटली आप अपने ऊपर भी काम करना है। सिर्फ मार्केटिंग करने से अच्छा नहीं, वो बाहर की चीज है। जी अपने ऊपर, अपने माइंडसेट के ऊपर वो स्ट्रॉन्ग लेवल बिलीव लेके आना चाहिए। देखो बहुत सारे परफेक्ट। लोग ना एज पे जाके गिव अप कर लेते हैं, हाँ है ना? हाँ हाँ और दे डोंट रियलाइज। जब अगर सोचो 5 साल पहले मैं जब स्टार्ट किया था, अगर जी मैं कंटिन्यू ना करता शायद हम यहाँ पे बैठ के बात ना करते। हाँ बिल्कुल। बट नाउ यू आर रियली इंस्पायरिंग अ लॉट ऑफ पीपल। आई एम सो हैप्पी टू रियली शेयर दिस विद यू। या सो दैट इज द थिंग। या तो ये चैलेंजेस आएंगे डेफिनेटली। परफेक्ट परफेक्ट। सो दिस वाज द इनिशियल थिंग। लेकिन मिड करियर, यू नो, जैसे कि आपने ग्रो करना शुरू किया तो जो चैलेंजेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो उनके बारे में भी बताइए सो दैट आई डोंट गेट स्टक अगेन। मतलब एक टाइम में आएगा कि आप ओके पैसा बना लिया बहुत, है हाँ ना? जी देन एक टाइम में आएगा आपका सेल्स डाउन हो जाएगा, जी फिर आप डाउट करने लगेंगे, जी आप इमीडिएटली कुछ चेंज करने लगेंगे जी ना। ये चीज मैंने बहुत बहुत बार देखा हुआ है। जी। बट ऑलवेज आई हैव टू say हाउ टू thanks, हैंडल दिस, हाउ टू how हैंडल to say thanks that I have always good mentors जो कि अच्छा। मतलब उनको पर्सनली उनको मैसेज करते हूँ तो वो सपोर्ट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर टाइम में मैं हाईली रिकमेंड, सी फर्स्ट फेज में आपको स्किल बिल्डअप करना होता है। जी ठीक वहाँ है पे मे बी कोच का बहुत जरूरत होता नहीं है, बट होता ही है। परफेक्ट बट जब इंटरमीडिएट स्टेज पे आप आ जाते हो तो हम्म। वहाँ पे कोच होना बहुत जरूरी है। परफेक्ट। एंड कोच हो या टीम मेंबर हो या कोई जो आपको इंस्पायर कर सके, हैंड होल्डिंग आपको गिव अप करने ना दे। वो आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। या फॉर मी व्हेन आई गॉट स्टार्टेड, मेरे लिए लाइक मेरे मेंटर्स थे जी एंड आई वाज लुकिंग अप टू देम। जी उन्होंने कि ये बंदा कर चुका है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। परफेक्ट और वो मुझे पुश करते थे पहले उस लेवल पे, स्टार्टिंग लेवल पे भी काफी, जैसे कि फेसबुक लाइव में करता था, वहां पे भी मुझे बहुत सारे मेंटर्स मुझे पुश किया कि करो सागर। वो आपकी कोच, आपकी मेंटर बहुत जरूरी है इस जर्नी में, बिकॉज ये जर्नी लोनी जर्नी है। एज ए सोलोप्रेन्योर अगर आप अकेले चलना चाहोगे तो ग्रो नहीं कर पाओगे, सो उसके साथ साथ लोगों को लेके चलना पड़ेगा। परफेक्ट परफेक्ट। लोगों के साथ टच बेस होना बहुत जरूरी है। Perfect. So how to find a right mentor? Because इतने सारे लोग हैं, we look up to all of them, but I can, you know, take help from one or two, like, you know, 10 लोगों से मैं inspiration लेती हूँ, but how do I choose the right one? See, there are like बहुत सारे मेंटर्स हैं, डेफिनेटली ऑनलाइन में डिफिकल्ट है जी ये कर पाना। और आज तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, आपके लिए शायद इजी रहा होगा 2020 में। उस टाइम में भी डिफिकल्ट इसलिए था, मैं बोल रहा हूँ बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे कोच कोविड फ्लो में आ गए थे। इवन आई एम ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ, यू कैन से, कोविड। बट ठीक है, बहुत सारे लोग उस टाइम पैसा कमाने के लिए चक्कर में आ गए, है ना? उनका इंटेंशन सिर्फ पैसा ये करना था, और 1 साल 2 साल रहे और आउट ऑफ द मार्केट, है ना? बस ब्लेम करते रहे कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बट वो उनका इंटेंशन था कि बस पैसा बनाए और चलते बैठे, है ना? तो वो शायद वेंट बैक टू द सेम सिचुएशन। परफेक्ट। तो मैं वही सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी कोच हायर करने से पहले थोड़ा रिसर्च करो जी। सिर्फ उनके वेबिनार देख के सिर्फ डिबिलीट मत करो। Perfect. उनके स्टूडेंट्स के जाके से उनसे बात करो, रियल फीडबैक लो। Okay. एक से फीडबैक मतलब एक ने नेगेटिव बोल सकता है, उसका एक्सपीरियंस खराब है, मे बी उसका प्रॉब्लम है, उसने एक्शन नहीं लिया जी। तो 4-5 लोग से बात करो।
perfect, तो आपको perfect, एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन है मेरा राइट मेंटर। सिर्फ perfect. अगेन स्टूडेंट से देखने के बाद भी आपको पता हम्म, नहीं चलेगा आप उस लोगों जो मेंटर के साथ कितना रेजोनेट करते हो, राइट? वो yeah, बहुत जरूरी है। आपका वैल्यू जी, सिस्टम कितना अलाइनमेंट है, जी, तो अलाइनमेंट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। perfect, perfect. या You feel like working with these people because वो selflessly, या give करते हैं. या Yeah, thank you so much for inspiring. And do you have any suggestions for us, like, because people may look up to me. So how do I handle that situation? Because I'm not used to. तो अगर लोग हमारे पास आते हैं हेल्प के लिए तो हम उसे कैसे हैंडल करें? बिकॉज समटाइम्स इट्स ओवरवेलमिंग वेयर आई फील कि आई एम नॉट अप टू द मार्क बट पीपल आर लुकिंग अप टू मी. सो उसको कैसे हैंडल करना है? लाइक अगर कोई मेरे पास आते हैं सपोर्ट के लिए जो कि मुझे लगता है कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ, समटाइम्स वी हैव दैट डाउट कि अगर मैं इनको हेल्प करूंगी गलती ना हो, वो तो उसका अगर कैसे वो करें? डाउट है तो आप पहले उनको एज ए कम चार्ज पे ले सकते हो, ठीक है, या मे बी फ्री क्लाइंट एज ले सकते हो। ठीक है, उनको हेल्प करो, टेस्टिमोनियल्स उनसे लो, ठीक है. रिजल्ट देने के बाद आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार आई कैन वर्क मोर, आई कैन चार्ज राइट नाउ, है ना? तो स्टार्टिंग में वही सजेस्ट करता हूँ जो बिगिनर परफेक्ट, कोचेस हैं, जी, जी, दे कैन स्टार्ट टेकिंग सम प्रो बोनो क्लाइंट्स, या, मे बी फ्री क्लाइंट्स, एंड वहां से वो ग्रो कर सकते हैं। perfect, perfect. That's a very good suggestion या because I was kind of stuck. आपने मुझे अनस्टक कर दिया. Thank you so much. थैंक यू। And generally, okay, this is about people, because there are so many, how can I say, word of mouth things and myths and all. तो क्योंकि अभी भी ऑनलाइन में हम लोगों को जो स्टार्टर्स हैं उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं. ऑफ कोर्स वी फॉलो यू एंड देयर अदर पीपल हु रियली हैव एस्टैब्लिश्ड, लाइक इतने सालों से वो काम कर रहे हैं. बट स्टिल देयर आर सम पीपल हु सजेस्ट देयर इज नो ग्रोथ लाइक इन ऑर्गेनिक. तो हाउ लॉन्ग शुड आई गो ऑर्गेनिक और कब हम पेड पर जाएं? दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग कि because people say there is no growth in organic but you are doing it, like, so मैं कैसे अपना सिस्टम क्रिएट करूं सो दैट आई कैन टेक द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनिक ग्रोथ जो कि है अवेलेबल ऑनलाइन बट मे बी आई कैन नॉट सी बिकॉज आई डोंट नो. सो देयर इज नथिंग कॉल्ड अ फ्री और पेड, जी, है ना? जी, तो ऑर्गेनिक अगर आप कर रहे हो तो उसमें टाइम चाहिए, जी, मेहनत चाहिए, एंड पेड में आपको बस पैसा चाहिए। वहां पे भी मेहनत चाहिए, ऐसा नहीं कि, है ना? बट वो फास्ट मेथड है जी, ना? जी, बट ऑर्गेनिक में भी हो सकता है ग्रोथ, जी, फास्ट मेथड, एंड बट द थिंग इज पीपल डोंट वांट टू स्पेंड टाइम implementing the process, अच्छा, पेशेंस. not patience only, because कुछ स्टेप्स होते हैं जी, जो लोग फॉलो करना ही नहीं चाहते हैं। ओके, बताइए ना वो क्या स्टेप्स होते हैं. जैसे कि मैं बोलूँगा कि एंगेज करो लोगों के साथ, Okay. कमेंट करो, है ना? ओके, नाउ पहले आप खुद तो कर लो पहले, ठीक फिर है, उसके बाद आप उसको आउटसोर्स कर सकते हो, ठीक है, है ना? ठीक है. बिकॉज इट इज नॉट अबाउट क्रिएशन, इट इज अबाउट ऑल्सो कन्वर्सेशन, एंगेजमेंट। आजकल लोग मैं देख रहा हूँ वो चार जीपीटी को यूज करके कमेंट डाल रहे हैं, हाँ जी, है ना? स्टैंडर्ड कमेंट्स. मैं सजेस्ट करूंगा आप 5 कमेंट पर डे दो, जी, 50 कमेंट के चक्कर में मत जाओ जहाँ पे एआई आपको हेल्प कर रहा है। परफेक्ट. आई कैन सेंस कौन सही कमेंट दिया है जेन्युइनली, कौन किसी के चार जीपीटी के हेल्प लिया है, और देयर आर लॉट ऑफ एआई टूल्स आउट देयर। जी, जी, कमेंट पोस्ट को पढ़ के या वीडियो को देख के वो कमेंट आपको बना के दे देंगे। जी, वो कभी मैं सजेस्ट नहीं करता, भले ही आप जी, अपने टीम को ट्रेन करो, है ना? यहाँ पे ह्यूमन एलिमेंट वहां पे दिखेगा, परफेक्ट. इट मैटर्स अ लॉट. इट मैटर्स अ लॉट। तो ये जो छोटे छोटे बहुत सारे अदर प्रोसेसेस भी हैं, हाँ, स्ट्रेटेजिक वे में कैसे आप फनल क्रिएट कर सकते हो फ्रॉम ऑर्गेनिक। तो लॉट ऑफ पीपल डोंट वांट टू इवन लर्न, ठीक है. उनको लगता है कि ये स्लो है हम्म, ना, उनको फास्ट ऐसे नहीं मिलेगा। सो रादर देन फॉर मी आई ऑलवेज सजेस्ट rather than getting 1000 leads, यहाँ पे आपके पास मे बी 50 क्वालिटी लीड्स मिलते हैं। I would maybe recommend to put an effort to generate 100 leads through ठीक है. organic, and जहाँ पे definitely maximum audience मेरे पास ये होंगे, right? रियल ऑडियंस. Real audience होंगे. So I'm not against of paid ads, even I will also do paid ads, but everything has its own essence, जी, है ना? जी, So yeah.
परफेक्ट. तो ऑर्गेनिक हाउ इज इट डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स? लाइक अगर हम ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाहें, आई नो यू आर अ फेसबुक एक्सपर्ट, हम्म, बट हमें बाकी प्लेटफॉर्म्स जैसे लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम एंड अदर थिंग्स, सो हाउ इज इट डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स टू ग्रो ऑर्गेनिकली? I will talk about the top three platforms, social ठीक है. media platform ठीक है that I have actually worked very closely. That जी. is like first Facebook, then Instagram, then LinkedIn. LinkedIn I worked during my job days while जी. I was generating like B2B clients from LinkedIn. जी. But just to share with you these three platforms, I'm not including YouTube here हाँ because जी. YouTube here you can connect with on one-on-one level. You Perfect. can definitely get very good Views. number of reach, Yeah. even right kind of quality clients from there. But that is not where you can connect in one to one. Perfect. हाँ है जी. ना? So when it comes to one to one, you can Hmm. connect on Facebook, Instagram, and LinkedIn. You Perfect. can talk to them. है जी. ना? जी. So this platform you choose based on your audience. जी. You will ask, you can do a quick survey or quick call to your 10 of your target audience. ठीक है. उनको, yeah, you can just simply message them. ठीक है. You just ask them which platform that you are active most, Perfect. or which social media app that you use most. Perfect. Out of that, they will give you, okay, this is something that I use most. Sometimes I use LinkedIn, something like this. For the primary, get into that. ठीक है. Based on that plan, कि which platform that you want to start with. Perfect. आपको पता लग गया कि वो कहाँ पे एक्टिव है, because if they are not active on certain platform, then you are just going to waste your time. That's why even I also started exploring about Instagram, like LinkedIn, based on the question that I asked to my audience, where they are actually active. जी. So your content strategy or social media strategy will be depend upon your audience. Perfect. Perfect. This is so interesting. मैंने कभी सोचा ही नहीं. Like this is so simple. Yeah. आप हर difficult चीज को simple बना देते हैं. I am really impressed. So one more myth, or maybe I don't know whether it is true. Facebook is dead. Is it true? Good question, but I would say is even I'm also inactive on Facebook since a long time. जी. But Facebook is not dead. We need to understand what is working right now on Facebook. Please tell me. हाँ. Okay. I would like to know. So, like the audience, again coming back to the same thing is जी. who or what category of like people are active on Facebook. Let's suppose that there's an age group 25 to 35. अच्छा. They're mostly active on Instagram. Okay. Another research that I did, there are age group of like 35 to 55. Okay. They are mostly active on Facebook. अच्छा, ऐसा भी है क्या? Yeah. Okay. Like some people like Facebook, some people like Instagram. Okay. There are certain kind of people, let's say working professional. ठीक है. They are active mostly on LinkedIn. जी. So first they need to be there to engage your content, right? हाँ, बिल्कुल. 2020 when I started, यहाँ पे like Facebook में काफी engagement था. Now Facebook has definitely changed some algorithm, but at the same time they don't change so much कि पूरा zero ही हो जाएगा. अच्छा. So we need to understand what kind of content that is working right now. जी. Perfect. पहले like people who used to watch for the text content and reel came. बिल्कुल. So content formatting is also very important. Perfect. So there are a lot of other parameters are there, but it is, I would say in one line is the lack of knowledge about our audience. Yeah. And the strategy is something that that people call it dead, but it is not dead. Because Facebook को भी पता है, आप सिंपल Facebook को भी पता है ना कि भाई मेरा प्लेटफॉर्म नहीं चल रहा है, Instagram का अच्छा चल रहा है. So why they will not work on them? Perfect. Yeah. Perfect. So one more myth is that, like, maybe I don't know, it's true कि Facebook or Instagram, number of followers is equal to number of clients. Is it true? No. Number of followers is not equal to number of clients. अच्छा. I have seen people who have more than 1 million followers. जी. They don't make the money that people make maybe 1,000 followers or 2,000 followers.
Okay, this is surprising for me. Really surprising. So it is not about how many people are following you. Acha, It is about who is following you. acha. Again, coming back to the same foundation, the Ji. target audience, Okay. who is Ah. following you, Okay. and Huh. whether your message is also like consistent enough. Acha. Okay, Huh. is it niche based or like generic based? Hmm. So a lot of elements that works when it comes to Hmm. like, so simple answer, the followers is not equal to the clients. Perfect. And there is one of the podcast I was listening to Ji. that the expert was sharing that even if a small number of followers account, even below 1,000 followers, Ji. that person was making $10,000 per month. Okay. So what is the criteria? Because I can see the number of followers over there. Yeah. How do I know who's my client, and what is the criteria for me to be able to, find out the right clients, and then I can focus on them, na? So if you build this right system, that will Ji. help you to like attract right kind of clients. Perfect. So First, system is for the important. System is important. Just to give you a quick Ji, step by bataiye. step, the first step would be the message Perfect. that you put on your social media. Ji. Okay, Ji. and the message that you are giving to your giving through your social media content. ठीक है. Is it for one person or like 10 type of person, right? ठीक है. How clear and like that person need to know that ये message मेरे लिए है, Perfect. and that person will respond to it. Perfect. है ना? It has to be clear message. I'll like give you an example. Like जी. say बताइए. you are a coach. जी. Okay, I'll say I will help you to grow your business. जी. First type of content. जी. Second type of content, I will help you to get your first 20 clients. Of course, that is more impressive. जी. I'm talking directly to the pinpoint. जी, बिल्कुल, बिल्कुल. To my right audience. Perfect. So how like clear you are with your message is more important than creating random content and it's going here and there. Vague message. Yeah. Perfect. So I have to learn a lot of things, and I'm Yeah. so happy because Thank you. I'm here with you today. Yeah, we are all grateful and thankful to him. So one more question comes over here, like when we decide the kind of content, and it has to be specific and referring to their pain points, and to be able to tell them that I can do something, that message should be conveyed across. But along the way, how do I create my personal brand? Because it's kind of difficult for me to put myself over there in this such a crowded space. So how do I create my personal brand? Because there are so many coaches. How can I do something? Maybe I know I'm better. I know that, but how do I convey the message, and how to create our personal brand in this day and age? I would say the first right now personal brand is to be authentic. आप कितने भी ठीक है. like beginner stage पे हो, अगर आपको personal brand बनाना है, be authentic. जो आप हो वही दिखाओ. ठीक Do not try to showcase something that you are not. Perfect. A lot of people come to this space, they try to showcase, okay, I've done this, that. But my suggestion is always to start from where exactly you are, not what you wanted to be. So I always be vulnerable and be authentic to my audience. So people will like and trust people who are actually authentic. The another step is to be consistent. People need to see you consistently. Sometimes people who may be having a 10 years of experience but not showing up, they are not seen. अच्छा. वो बोलते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है. But thing is आपको ऑथेंटिक रहना है, उसके साथ साथ कंसिस्टेंट भी होना है. Perfect. है ना, तभी जाके लोग आपको ट्रस्ट करेंगे. एंड दैट्स व्हाई आपको अगेन पर्सनल ब्रांड इज नॉट अबाउट कि आपके पास कितने फॉलोअर्स हैं. अच्छा. है ना, पर्सनल ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट आप किन उनके सामने लाइक कंसिस्टेंटली एंड ऑथेंटिकली आ सकते हो. Perfect. The third one that recently that I learned this powerful way is personal branding is not about what you talk about your brand. It is more about what people talk about your brand when you are not in the room. Perfect. No. This is amazing. That is the personal brand all about.
So I Perfect. think if like anyone, if they follow this 3 way, Yeah. they can build a personal brand. Perfect. Thank you so much. Yeah. This is amazing. And all the secrets, he's telling us today. So we're really lucky to get so much information in such a short span of time. So can I continue further? Yeah, Because I have so please. many questions, right? So how do we overcome procrastination in this space? Because like sometimes people will not watch you. There is no likes, no comments, nothing. So how to overcome that space and how to avoid procrastination in this kind of a space, because this stage will come. But how do we continue? Because consistency चाहिए, उसको कैसे बनाएं? So let me tell you, I still have a procrastination, ठीक है, but there is something that non-negotiable that I can't procrastinate. perfect. Let me tell you, since you are already part of our community, and if I commit for Monday morning 8:30 a.m. I have to be there for people. Yeah, Monday morning calls. Monday Yeah. morning calls, right? Hmm. So what happens here? Hmm. I commit for someone else. Perfect. जब हम अपने के लिए कमिट करते हैं तो हम नहीं कर पाते नहीं हैं, कर पाते. बट किसी और के लिए अगर हमने कमिटमेंट दिया है, so create commitments for somebody else. But definitely when it comes to your audience. Perfect. Okay. Perfect. So I do like this. Perfect. If I have to create some non-negotiable that I can't deny that. Skip. Yeah. Okay. I have session in next 30 minutes. I can't deny that I have to be there. जी. Do you think can I procrastinate that? Not at all. I can't. We are lucky to be in your community actually. Yeah. He's there every time on time. So that is the thing. Mhm. So you can't procrastinate when you commit for something. So Perfect. I would say start creating mini commitment ठीक है, to someone. ठीक है. Now maybe you can keep an accountability partner. Okay. But again, कभी कभी accountability partner के साथ भी आप चीट कर सकते हो कि चलो यार कोई नहीं हाँ. दिख रहा है, चल यार आज नहीं हो रहा है. हाँ. But one thing that I have learned that Hmm. accountability partner के साथ you can put something called a money हाँ. as Perfect. as a commitment. जी. If I don't commit to Sure. do something, Yeah. I need to pay maybe 100 rupees, 1000 rupees, something like that. Because money has a very strong emotion to it. People don't want to give money very easily, right? हाँ. So if you can put something at stake. Yeah. So the question is, what is at stake when it comes to procrastination? When I started my 365-day Facebook Live journey, हाँ जी. nobody was holding me accountable हाँ. because my stake was really high. हाँ. So what is that stake that is you are trying to achieve that? हाँ. है ना? So many time for me, if I will not consistent, I'll go back to the job again. So my career was at stake. जी. तो जब भी हम स्टेक पे नहीं होते तो हम इजीली छोड़ देते हैं, चलो यार हाँ. कर लेते हैं. Perfect. So my simple answer would be like commit for something and ask this question: what is at stake to do this? Why I want to do that? Well, yeah. Perfect. So I must have a very strong reason to be there every day, every moment. Yeah. And if I commit to somebody else, that's the way to go. Yeah. Perfect. Thank you so much, Sagar. So when you started in 2020, the online space was different. And now in 2025, it's a bit different. Yeah. So although we know the differences, but what should I take care, as a coach who's starting in 2025? What should be my approach? So 2020 when I got started, Ji. the marketing was like impulse buying. People are buying because of fear. अच्छा. Okay. कि यार ये नहीं लेना तो अभी चला जाएगा, ये कभी नहीं मिलने वाला है, right? Okay. So people are like impulse, they're buying. Okay. But right now, after 5 years, for 2025, what I believe is people are buying with very smart, like they are doing a lot of research. Like as I said, like you can ask the people who are already taking that services. You can search about the reviews. It's not like first time people are doing it. Acha. So yes, people actually take a lot of actions based on the other people opinion. Right now, if you can create more results and be authentic, already I mentioned that, and be consistent. ठीक है. That's the best way to get started. Perfect. In 2025. Perfect. Thank you so much. I'll take care of all these things, definitely. But still, there is a difference in mindset, and the imposter syndrome. So how do we overcome that? It will creep in some time, So
these things are like human. Yeah. तो कैसे हैंडल करें इसको? When it comes to imposter syndrome, there is always someone is way ahead of you. Yeah. Okay, you'll never feel like okay, you have arrived. जी, Always work in progress. ठीक है. So when I got started, one thing that I was having this thing as well, but I was having in the back of my mind, ठीक है. I just need to be one step ahead of the people who are following me. हम्म, Okay, Hmm. if I am at 5th standard, I can teach 2nd standard student. हम्म, Similarly, I don't have to be a 10 out of 10. हम्म, है ना? हम्म. If I am 5 out of 10 at this skills, I can help the person who are 0 out of 10 or 1 out of 10. Okay, that's very impressive. So this is how I used to like remove the imposter syndrome. Perfect, perfect. Yeah. You are making everything so simple. I'm wondering what to ask. Anyways, so and how to manage the time, because it's sometimes overwhelming. You know, things come up randomly. ठीक है ना? I start shooting, then oh my god, editing is not happening. I start editing, oh my god, recording is not happening. Things go, you know, in a different way. So how to manage my time in the face of uncertainties that will creep up? When it comes to like when it comes to any coaching, जी, I see a lot of people complicate a lot of things. जी. Why? Okay. The reason being they wanted to do everything at one step. Okay. Okay. Hmm. So my suggestion would be find out impact making activities. ठीक है. Okay, that is the way to solve. See, today I have a lot of things to do, जी, but I am here because I want to look at what is something that will create more impact. जी. Okay, if I'm taking on some kind of actions, what will give me the maximum impact in my business? Perfect. Based on that, I'll take a decision. Perfect. Perfect. So we can save a lot of time by, you know, choosing the impact making Yeah. activities. Perfect. That's great. And one more question many of us have as of now, you know, how to get or how to create the high ticket, you know, offer and get high ticket clients, because we all, you know, want to help a lot, but we do need the money to keep the cash flow. So Hmm. how to get the high ticket clients? So I would say when it comes to high ticket, Hmm. we need to build high value first. ठीक है. There is one client, one story I would like to share, that one person, Hmm. that person made 10 lakh in a Mhm. month, Mhm. and the next month it was 0. Okay. The next month another 0. The next Okay. month another 0. I said, what happened? Yeah. What is not happening? Hmm. That person said, Sagar, I'm not able to give results to my clients. अच्छा. So the person like did a great launch by like selling 1 lakh program to 10 people, made 10 lakh, was happy, but nobody was getting results. अच्छा. And that backfired that person. Okay. So for that, I'd say is even if you start maybe helping 1 or 2 clients for free, हाँ. create a results, Hmm. then go launch it, or maybe take low ticket or mid ticket, Perfect. where you like people will not do a negative word of mouth for you. हाँ जी. You know, so then you will consider as a scam. Okay. Perfect. Perfect. So first validate it, Hmm. then launch it. Perfect. Yeah. Perfect. But and I also want to know how to create an offer basically, and why the offers don't work. ठीक है, एक तो आपने बताया कि हमें रिजल्ट देना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट समटाइम्स आई एम गिविंग द रिजल्ट्स एंड दैट ऑफर इटसेल्फ इज लाइक, यू नो, हाउ कैन आई से इट डजंट वर्क, इट सिंपली डजंट वर्क. सो हाउ टू क्रिएट एन ऑफर फर्स्ट ऑफ ऑल? See, offer is nothing but your product जी, plus the value addition that you do. जी. And when it comes to offer, let's suppose you as a coach, Hmm. you will share like selling in the webinar जी. or maybe one-to-one calls. Hmm. Okay, people need to know that Hmm. what is the unique about you. जी. If the same thing that is already thousands of people are selling, जी. then that is a commodity. Mhm. Okay, like Mhm. आप वेजिटेबल मार्केट में जाओगे ठीक तो है. वहां पे सेम टमाटर दोनों जगह है, तो आप देखो कि यार कौन सस्ता में दे रहा है, परफेक्ट. कौन मुझे सस्ता में दे सकता है, राइट? ठीक है. वो कमोडिटी हो जाएगा. सो जी. व्हेन you really wanted to create an offer, हाँ. that offer has to some kind of a USP into it. What is Okay. specialty about it? Okay. What is the problem that you are solving that other people are not doing it? Mhm. First element of offer is this. Mhm. And a lot of people do not
communicate offer well in the webinar ho ya whenever they're presenting an offer is अच्छा because they try to sell the course, not the transformation. अच्छा So to create a good offer, it is more about Hmm. having that clarity of the journey हम्म, and the end goal defined in that offer is Mhm. very important. People think discount is an offer अच्छा or maybe giving a lot of bonuses is an offer. जी It is not that. People don't Okay. want more. People want what can actually give them a transformation. Perfect. Perfect. This is amazing and really, an eye opener for me. Thank you so much. So, but then what about your 0 to 10 lakh journey? So, what are the steps, If someone wanted to go from 0 to 10 lakh, Yeah. whatever. like for me, like if I would start from scratch, जी. I would first like create content for specific target audience Mhm. in one specific platform Perfect. with one offer Perfect. solving one problem. Perfect. The power of one works like magic. Okay. Okay, people try to get into too many offers, Hmm. too many things, solving different problems. So people get confused. Acha. Confused mind never say yes. अच्छा. Okay, so you need to drill down to the one thing. Mhm. That will take some time, maybe doing some like research. Mhm. Okay, talking to a lot of people on Mhm. one-to-one clarity call. Then you see what are the immediate problem that you can solve. Mhm. And be consistent with the message. I see a lot of people selling productivity coaching today, tomorrow is law of attraction, day Acha. after tomorrow NLP, Mhm. like so many things. Mhm. Okay, Mhm. and that is something that like that people do not know what is something this person does. अच्छा. Okay, Hmm. now so power of one is very very important. Perfect. Then for that we need to create a value for consistently in 3 levels. जी. The first level is content creation. Mhm. The second level is doing consistent conversation with your clients Mhm. who can be your potential customer, Mhm. like you're doing webinar or one-to-one calls Perfect. consistently. Perfect. Maybe you can choose one day one clarity call Hmm. or weekly 5 calls. Perfect. Or if you are doing one to many, then you can say one webinar per week. I'll be Perfect. doing for next 1 year. Perfect. 52 weeks webinar in the next 1 year. Perfect. So that is the second level of consistency. Commitment, Then हाँ. third level of consistency is where you serve your audience. Mhm. You show up for your community. Mhm. You're like helping them to achieve the results. Mhm. So when you show off in 3 levels, Mhm. the magic will unfold and you will see that people will start recommending to you. Perfect. So Perfect. I would start like this. Perfect. Power of one जी. and be consistent in 3 levels. Perfect. Thank you so much for making it so simple. मुझे लग रहा है मैं सब कुछ कर सकती हूँ. Just like today, Thank you so much. So, and what is the difference between low ticket and high ticket? When we create an offer, like because maybe I'm not able to decide what exactly. So low ticket can be like you just give information ठीक है. and maybe just knowledge and you can ask them to do. Mhm. High ticket can be same informations but you can handle them, support them. अच्छा. Uh-huh. So simple distinction between low ticket and high ticket. Perfect. This is very simple. और कभी-कभी what happens is we have inconsistent leads, coming in. Hmm. So how do we handle that? Of course आपने बोला up and down होगा, but जो inconsistency होती है उसको handle कैसे करना है? इसका मेन मतलब होता है कभी कभी हम इनोवेट नहीं करते हैं. जी. Inconsistent leads means we just try to use same thing for maybe years. अच्छा. Okay, maybe we try to use 2020 method in 2025. Mhm. We'll see what is working right now and what is learning about updating ourselves. अच्छा. Sometimes people don't update themselves. Mhm. So that is leads to inconsistent leads. Yeah. Perfect. And what about low quality leads? Low quality leads like junk leads or you say हाँ. random उनको people. कैसे handle So again it is boiled down to are you unselling? अच्छा. Okay, are you clear about your message? हाँ. Who you are talking to? हाँ. That's where that is important thing. So ads में mostly ये junk leads like not quality leads आते हैं. अच्छा. तो वहाँ पे कभी-कभी ads system के ऊपर depend करता है. हाँ. Mostly अगर ऑर्गेनिक में बताया जाए तो इट्स मोर अबाउट आई वुड से
wrong message हाँ or wrong places. अच्छा Yeah. so but we can handle that उनको हम थोड़ा Yeah. filter out कर सकते हैं Yeah. ठीक है but okay so once I get very good quality leads so how do we nurture them So nurturing is very simple. You जी need to show off जी for delivering a value ठीक है on a consistent basis. perfect Okay, that is the first thing. हम्म And nurture is like also acknowledging their wins, अच्छा acknowledging their effort. If you're building a community, that is the best way to nurture. perfect perfect There's a two type of community that I would say. One जी is a free community where you nurture your free leads. जी One is a paid community where you nurture your paid clients. हाँ जी So based on the goal that you will need to nurture and give value and show up for them. perfect and there are two more things that sometimes baffle us हमें समझ में नहीं आता कि इसकी वजह क्या है one is low webinar turnaround and second is low webinar conversions so इसमें हम क्या करें handle Low webinar turnaround मतलब show up जी शो वो काफी फैक्टर है उसमें जी बट सिंपल फैक्टर इज लाइक द टाइमिंग ठीक है अगर आप 15 दिन पहले अपने वेबिनार को प्रमोट किया था यू नीड टू डू द वेबिनार इमीडिएटली ओके एंड सेकंड थिंग इज गिविंग द रीजन टू रेस्पॉन्ड ओके व्हाट इज द रीजन they need to join ओके giving them something like a gift अच्छा so that they can show up अच्छा so हाँ, people join your webinar giving perfect. some testimony how other people have transformed and benefited in the past workshop or webinar and low conversion के ऊपर again offer is the main like I would say is your energy ठीक है the delivery perfect your offer हाँ is contribution towards the conversions so I've created one detailed YouTube video maybe I can put it in the description yeah where I have given actually 7 step checklist ठीक where है they can go through the each detail that why what are the elements of conversions perfect yeah thank you so much I would like to have that Yeah. and how can we have a predictable income online with this thing for me is just being consistent whatever Acha. you do and keep innovating perfect it's very important right yeah वैसे तो everything is not predictable but still we want to have because Yeah. if I move into online space तो definitely हम चाहते हैं कि एक consistent earning हो Yeah. it can be up and down yeah but zero is sometimes kind of scary yeah perfect ठीक है so how do I create a sales pitch please ये बताइए ये बहुत बड़ी टॉपिक है हाँ बट सेल्स पिच इज नथिंग बट योर ऑफर कम्युनिकेशन ठीक है how do I हाउ communicate विल हमने जब अभी बात किया था जी इसमें क्या होना चाहिए जब मैं लाइक द गोल द जी जर्नी perfect द लाइक द बोनसेस ये सब पिच के ऊपर बेनिफिटेड है अगर आप ऑफर के हाँ. बारे में अच्छे से मतलब स्टडी करोगे देन यू विल एबल टू क्रिएट अ गुड पिच good sales pitch also Yeah. perfect so okay sometimes Sagar we are not very clear about our funnel तो कैसे क्लैरिटी पाएं अपनी फनल के बारे में लाइक व्हेन मे बी वी आर इन द मिड ऑफ दिस ऑनलाइन स्पेस दो तरीके से होते हैं फनल जी. मतलब एक कस्टमर एक्विजिशन फनल एक हो गया डिलीवरी फनल ठीक है स्टार्टिंग फेज में मैं सजेस्ट करता हूँ 1-to-1 करो ठीक है है ना देन धीरे धीरे कस्टमर एक्वायर करने के लिए 1-to-many वेबिनार वर्कशॉप मॉडल पे जा सकते हो परफेक्ट डिलीवरी साइड में सेम चीज जी स्टार्टिंग फेज पे आप 1-to-1 कोचिंग दो ओके then go to group coaching community based coaching ओके because 1-to-1 is the best way to get started so वैसे ही स्केल होता है वो सारा चीज okay so we can have some funny questions right ठीक है maybe you can answer if you want to so who was your first crush I don't remember seriously yeah okay so which have been your most amazing day in the online journey like just one day that will be click. that is the day when I received an email from Russell Brunson that अच्छा I am a top 20 affiliate in the world okay मैंने कहा अरे इंडिया में सिर्फ अकेले बंदा हाँ तो that was like most memorable day in my okay online journey. how did you celebrate that Fantastic I was in my home and it was just fun perfect and then anything message you would like to give the people who are watching you because we have so many questions and it will be difficult to ask you everything today but फिर भी आप कुछ बताना चाहेंगे so that we take care of the things and we really really admire you and we follow you
बट क्या करें कि बेहतर कर सकें? I would say have a pure intention to serve, love, and impact. हाउ डू वी डेवलप दैट? ये भी बता दो आप. Just treat your audience or students like a family. ठीक है. Everything will be sorted. Perfect. Thank you so much. He makes everything seem so simple. मुझे लगता है मैंने बहुत difficult questions बनाए थे, but Sagar, you have made my life, I think. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, everyone.